My voice is clear? वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So today we are going to start a new topic, and it's Unit 4, which is Fourier transform. Good morning, ma'am. Good morning. So Fourier transform is basically it's an image processing tool which is used to decompose an image into sine and cosine components. So suppose we have a function f of x which is defined over the interval minus infinite to infinite. Then Fourier transform और इसको कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं. Complex Fourier transform is defined as an integral (1 by square root of 2 pi minus infinite to infinite e raised to the power isx). As the iota terms involved over there, so we called it the complex Fourier transform also. Whenever it exists, and it's denoted by sometimes f of s bar, or notation may change from to both. So this integral, if it exists, is the complex Fourier transform. Now you see that this is the complex number here. तो मैं इसको लिख सकती हूँ, किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको? e raised to the power isx को. How can we break it? किसमें ब्रेक कर सकते हैं? Sin and cos में. Yes. Cos sx plus I sin sx. Okay. F of x dx. Now separate this integral.
cos sx f of x dx plus iota sin sx f of x dx. Now, if we have a function, it may be even or odd. ऐसा भी हो सकता है. तो अगर मेरे पास फंक्शन इवन है तो ये वाला भी इवन होता है. यू नो दैट कोसाइन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन एंड साइन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन. तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 0. एंड अगर एफ ऑफ एक्स इवन है तो जो इसकी वैल्यू होगी इट विल बी ट्वाइस ऑफ 0 to infinite cos sx f of x dx. And if function is odd function, तो ये जो मेरा next integral होगा, the value of this will be 0 and this sin function will be, अगर मैं इसकी odd function की बात करती हूँ, so sin function is odd function and f of x is odd function. So integral will be twice of 0 to infinite sin sx f of x dx in case for the odd function. और इसको मैं लिख सकती हूँ square root of 2 by pi 0 to infinity cos sx in the same way square root of 2 pi by 0 to infinity sin sx f of x dx. So the Fourier sine transform is defined by this integral. If a function which is defined over the integral 0 to infinite, आप लिख सकते हो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा मेरे पास? फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन करा गया है यहाँ पे? हाफ इंटरवल पे. It lies between 0 to infinite and integral is defined as, we denote the Fourier cosine transform. This is C. This C denotes the Fourier cosine transform and it's equals to square root of 2 by pi 0 to infinite cos sx dx. And condition here is whenever it exists. And x belongs to n. So this is my Fourier cosine transform cos sx f of x. Of x is also cos sx f of x. In the same way, if we are talking about the inverse Fourier cosine transform, तो कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, inverse Fourier cosine transform, then it's simply f of x, this integral will be equals to, so this is the inverse Fourier cosine transforms, fs of s cos sx ds. This will be in terms of with respect to s now. So this is the formula for the inverse Fourier cosine transform. In the same way, we have a Fourier sine transform here. Fourier sine transform means the function is defined over the integral 0 to infinite and we denote it by f s of s and it's equals to this value of the integral square root of 2 by pi 0 to infinite sin sx dx. So we have a Fourier sine transform and it's defined over the same condition. Function must
f of x defined over the integral 0 to infinite. So we denote by fs of s, and it's equals to sine sx f of x dx. So this is Fourier sine transform. In the same way, we defined inverse Fourier sine transform, and it's equals to inverse Fourier sine transform. The formula for inverse Fourier sine transform is equals to, this is fs of s sine sx ds. So this is inverse Fourier sine transform. Is this clear? Is this clear? Yes, ma'am. Now suppose the problems इसमें किस तरीके के आएंगे? You have a function given और उसका मुझे या तो complex transform evaluate करना होगा या sine transform or cosine transform. So the problems are very simple and which depends directly on over the formula. One more thing, you can write the inverse formula for complex transform also. यहाँ पर जो मैंने डिफाइन करा है. मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? वो थोड़ा कनेक्शन इशू हो रहा है आज. अभी अनस्टेबल शो कर रहा था. दैट इज द रीजन. बीच में कभी सही आ रहा है, कभी गड़बड़ हो रहा है. काफी देर से ऐसे हो रहा है, फ्लक्चुएट. हाँ मैम, रुक रुक के आ रही है आवाज. So कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. फोरियर ट्रांसफॉर्म तो ये हो गया. अगर मैं इसका इन्वर्जन फार्मूला लिखती हूँ तो इन्वर्स फार्मूले के लिए दिस इज द इन्वर्स फार्मूला मैं लिख देती हूँ यहाँ पर. इन्वर्जन फार्मूला जैसे हमने साइन कोसाइन का लिखा है वैसे ही ये कॉम्प्लेक्स का भी है. तो इट्स इक्वल्स टू f of x या and 1 upon square root of 2 pi. Function limit of the function varies from minus infinite to infinite, and it's fs e raised to the power ये हो जाएगा minus sx dx. सॉरी ds. इन्वर्जन में विद रेस्पेक्ट टू s होगा. So this is the inversion formula for complex Fourier transform. Now next I'm going to discuss a relationship between the Fourier transform and the Laplace transform. एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, रिलेशनशिप बाद में देखेंगे. सपोज क्वेश्चन है मेरे पास. फंक्शन इज डिफाइंड एज. आवाज क्लियर आ रही है मेरी? x 2 minus x. यस मैम, बीच में ब्रेक हो. हाँ वो अभी वापस डिस्कनेक्ट हो गया था. ये वरना तो x lies between 0 to 1, x lies between 1 to 2, and x is greater than 2. Now find the Fourier sine transform and Fourier cosine transform of the following function. Okay, so you know that the formula for evaluating the sine transfer कैसे करेंगे हम?
It's denoted by fs of s, and it's equals to square root of 2 by 0 to infinite f of x sin sx and dx. Is this okay? Now can you evaluate it? Can you evaluate this? मुझे फंक्शन की वैल्यू पता है यहाँ पर, इट्स गिवन ओवर द इंटरवल्स. सो हम क्या करेंगे इसको